Okay, hello all. Let's start our discussion on the interfacing of ADC to the 8051 microcontroller. So, in the last class, we have discussed about the analog to digital converter, and there we have discussed that there are two type of analog to digital converter. One have the serial data interface, and another one has the parallel data interface. Now, in the case of parallel data interface, as you can see here, because we are using the parallel ADC to connect it with the 8051 microcontroller, you can see that it has 8 output lines, and these 8 output lines are connected to the 8051 microcontroller. So, in the case of parallel data interface, to send every bit, you will use a single line, and in the case of serial interface, you use a single line to send the entire output data. So first we will use the parallel ADC to connect it to the 8051 microcontroller. So what will happen in the case of when you connect interface the ADC to the 8051 microcontroller, first we provide the input signal to the ADC, and that input signal is basically the analog voltage, and that analog voltage basically reflects some kind of physical quantity like your temperature or something like that, which you try to sense from the physical world. So when you sense something from the physical world, that physical quantity we represent in the terms of a analog voltage, and that analog voltage we will fed to the ADC as an input. Now your ADC convert that analog input voltage into the digital data and pass this particular digital data to the microcontroller. As we have discussed in the last class also, that there are certain microcontroller which have the inbuilt ADC, मतलब उनके जो microcontroller chip होती है उसमें आपका ADC inbuilt होता है. There are certain microcontroller like 8051, it does not have the ADC inbuilt, so we have to externally connect the ADC to it. So here we are using one such ADC to interface it to the 8051 microcontroller. So we give the analog input voltage to the ADC, it converted to the digital output, and then send it to the 8051 microcontroller, where it is stored in the RAM of the system. It could be possible that your microcontroller just display that information to the user, or it may possible that this information will be used by the microcontroller for the further processing. So here we are using ADC 0808 or 0809 for the interfacing with the 8051 microcontroller. As you can see, it is a 8-bit parallel ADC, and it will use the successive approximation technique for analog to digital conversion. We will not go into the depth of what is SAR technique to convert, because this is not the part of our syllabus. We just see that it used this kind of technique to convert the analog data into the digital data. Now here you can see the block diagram of the connection between the ADC and the MCU. So here you can see the 8051 microcontroller. From ADC, you will see the input port is connected to the input port of the 8051 microcontroller. There are certain control signals like start conversion. इस type के control signal जो है, that will come from the 8051 microcontroller to the ADC to tell the ADC now start the conversion. When your ADC will finish the conversion part, it will send an interrupt signal to the 8051 microcontroller. So that control signal, something like AND conversion, will go to the microcontroller 8051. So we have certain control signal that come from 8051 to ADC, and there are certain control signals something like AND conversion that come from ADC to 8051 microcontroller. And as you see that the input for the ADC is the analog voltage value that we sense through some sensor and convert it into the analog voltage and then fed into the 0808 ADC here. Now this is more elaborated diagram of your 08080809 ADC. आप देखोगे यहाँ पे 8 इनपुट लाइंस हैं और 8 आउटपुट लाइंस हैं. ठीक है, ये आउटपुट लाइंस जो आपकी एडीसी की हैं, ये वाले इनपुट पोर्ट है. ठीक है, तो ये जो आप D0 से D7 यहाँ पर देख रहे हो, that will be connected to your 8051 microcontroller, and here you can see there are 8 input line, but out of those 8 input line, only one will be activated at a time.
ठीक है। तो इन 8 इनपुट लाइंस हैं हमारे पास, पर डेटा हमेशा एक ही इनपुट लाइन पर आएगा। किस इनपुट लाइन पर आएगा ये डिपेंड करेगा कि आप इन 8 इनपुट लाइंस में से किसको आप सिलेक्ट कर रहे हो। टू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर इनपुट लाइन वी विल सेंड वन पर्टिकुलर एड्रेस ऑन दीज 3 पिंस ए बी सी। ठीक है। तो ये जो 3 पिंस हमें दिख रही हैं ए बी सी, इन पर हम एक एड्रेस सेंड करेंगे और जो भी एड्रेस आएगा आपका उसके अकॉर्डिंगली हमारी वन इनपुट लाइन सिलेक्ट होगी। से सपोज हमने यहाँ पे ए पे भी 0, बी पे 0, सी पे 0, तीनों पे 0 0 0 सेंड किया, तो विच इनपुट लाइन विल बी सिलेक्टेड? IN 0 will be selected. If 0 0 1 will come, then IN 1 will be selected. Now who will send this address value? This address values will come from the 8051 microcontroller. देन वी हैव द एड्रेस लैच इनेबल। आप जब एड्रेस प्रोवाइड करोगे तो वो एड्रेस जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपकी एक इनपुट लाइन को सिलेक्ट होना है, तो एड्रेस को लैच होना है। तो लैच होने के लिए हमें क्या सेंड, एड्रेस के साथ साथ हमें और कौन सा सिग्नल एक्टिवेट करना होगा? एड्रेस लैच इनेबल। सो दिस इज फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। देन यू हैव EOC. EOC is AND of conversion, means once your conversion will be AND, this line will be activated. Now here you can see SE. It is not SE, it is SC. C for cat. Start conversion. It represents start conversion. This is the printing mistake in the book. This actually the SC line, start conversion line. Okay, and the next one OE is basically your output enable. It means once you convert the data, once your ADC will convert the analog input into the digital output, it put the data on the data line. So that data which your ADC will put on the data line will be read by the 8051 microcontroller only when this signal is activated. तो 8051 माइक्रोकंट्रोलर जो डेटा आपका डेटा लाइंस पे होगा उसको तभी रीड कर पाएगा जब आउटपुट इनेबल सिग्नल जो है वो आपका एक्टिवेटेड होगा। सो दिस आउटपुट इनेबल इज टू रीड द डेटा फ्रॉम दिस डेटा लाइन। देन यू हैव अ क्लॉक सिग्नल, यू हैव द पावर वोल्टेज एंड द ग्राउंड, एंड दिस इज द वोल्टेज रेफरेंस कि कितना वोल्टेज आप सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि एडीसीज में एज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास देयर आर वेरियस मोड एंड द स्टेटस, सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव अ रेफरेंस वोल्टेज, प्लस वोल्टेज एंड माइनस वोल्टेज। Now this is some of the key specification of 0809 microcontroller. I am not going to read out these things. Now here you can see the channel selection. It means out of the 8 analog input lines, if you have to select one of the line, what address value you will provide on the ABC address spaces that you can see here. तो ये जो ABC pins हैं इन पे आप क्या वैल्यू प्रोवाइड करोगे जिससे कि आप वन ऑफ द इनपुट लाइन को सिलेक्ट कर सको। तो दिस इज दैट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। इट्स वेरी इजी, इट्स जस्ट द बाइनरी फॉर्म। आप देख सकते हो 7 के लिए तीनों में 1 है, 6 के लिए 1 1 0, इट इज समथिंग लाइक दैट। ओके, नाउ लेट्स सी। सो दिस इज द सेम थिंग कि आप एड्रेस लाइन पे एड्रेस प्रोवाइड करोगे एंड देन यू प्रोवाइड address, then you activate the address latch enable or ALE signal so that the address will be latched and you will select one of the input lines. So this is the same thing written here. Now let's see how your ADC will convert the data and put the data on the output line. So as we have already discussed in the previous class also, that whenever your ADC convert the input data into the output data, it require a clock pulse for this. Based on a reference clock pulse only, it can convert the input data into the output data. So here we have this particular clock signal. Now if you have to convert the data, first you have to select on which input line your data will come. तो हमारे पास 8 input lines है, 8 में से किस input line पर हमारा data आएगा, तो उसको select करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा address provide करेंगे। और address हम किस पे provide करेंगे? We will provide the address on these 3 lines. Then we, as you can see, this is ALE not ALE bar. ALE है, ALE bar नहीं है। तो इसको अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आपको सिग्नल क्या करना होगा, लो से हाई पे करना होगा। So this is what we are doing in this figure. We provide the address on the address buses. We make the value of ALE as low to high for some period of time so that the address will be latched and you are able to select the input line. Once you select the input line, then you activate the SC signal और start conversion signal. इसको आप write भी कह सकते हो, इसको आप SC भी कह सकते हो. So you activate here again it is SC not SC बार बार नहीं लगा किसी के ऊपर, इसका मतलब कि एक्टिव हाई है। हाई है मतलब कि आपका सिग्नल क्या होना चाहिए, अगर लो जा रहा है तो लो से जब वो हाई पर आएगा
तब ये पिन एक्टिवेट होगा। तो अभी तक हमारा सिग्नल लो था, सो व्हेन यू मेक लो टू हाई फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, आप इसे लो से हाई रखोगे तो your ADC will treat it as a start conversion signal, and then it start converting the analog data into the output data, and it takes certain clock cycles to convert this analog data into the digital form. So it takes certain time, here you can see it takes certain time, until that particular time जो आपका end of conversion signal है वो आपका हाई जा रहा है। जैसे ही आपका डेटा कन्वर्ट हो जाएगा, completely कन्वर्ट हो जाएगा, you will send end of conversion. This should also high, should not low, because it is EOC. There's some mistake in this timing diagram. I will recheck the same thing again. It is taken from the book, but if you are writing it EOC here, not EOC bar, so then it should also go from low to high. पर यहाँ पर इसको उल्टा किया हुआ है, हाई से उन्होंने लो पर किया हुआ है, तो दिस इज सम प्रिंटिंग मिस्टेक है। इट शुड ऑल्सो गो फ्रॉम लो टू हाई, so that the end of conversion signal will be generated, and when this end of conversion signal will be generated, this signal will be sent from ADC to microcontroller। the microcontroller के पास end of conversion signal जाएगा, इसका मतलब microcontroller understand this thing that the input data is converted into the output data। now your microcontroller has to read the data, so read the data, what your microcontroller will do, it send the output enable signal, or you can say the read signal। so to enable this thing, again we will make it from low to high। so once your output enable signal will be activated, it go from low to high, it means the it send this signal to the ADC। when the ADC will get this particular signal, it put the data on the data buses, and then data will be transferred to the 8051 microcontroller। so जब ये सिग्नल आपका हाई होता है, उसके बाद में आपके D0 to D7 लाइन पर डेटा आपका माइक्रो कंट्रोलर पुट कर देता है। सो दिस इज हाउ द थिंग्स विल वर्क। द ओनली थिंग, ये जो EOC का आपका सिग्नल है ये रॉन्ग बना हुआ है, इसको हाई टू लो होने के बजाय लो टू हाई होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे EOC यूज कर रहे हैं, EOC बार यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, बुक में लाइला बिदास में काफी सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है, सो दिस इज अगेन वन ऑफ द प्रिंटिंग मिस्टेक। सो दिस इज द सेम प्रोसेस दैट आई हैव डिस्कस्ड हियर कि किस तरीके से हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं, वी विल पुट द सेम थिंग। सो हियर यू कैन सी द सेम थिंग अगेन, योर ADC data lines are connected to the port 2 of 8051 microcontroller। so here you have 7 data lines, so you use the entire port to connect to the ADC। then port 1, 3 lines, uh, P1.0, P1.1, 1.2 is used as a control signal। Two control signal will go from microcontroller to the ADC, and one control signal will come from ADC to microcontroller। So address latch enable and start conversion, these are the two control signal that will go from your microcontroller to the ADC, and end of conversion is interrupt kind of signal। once your ADC finish the conversion part, it send this interrupt signal to the microcontroller saying that I finished the conversion, now you can read the data। so once your 8051 microcontroller will get this particular signal, it send the output enable signal to the ADC, and ADC will put the data on the data buses, and then this data will be forwarded to the 8051 microcontroller। so you can see P1.0 to P1.3 तक जो हम पिंस यूज कर रहे हैं, ये पिंस हमारे कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफर करने में यूज हो रही है, और उसके आगे हमारे पास जो 1.5, 1.6 एंड 1.7 है, थ्रू दिस वी आर sending the address on the address buses to select one of the input lines। so we have 8 input lines, and we can select one of those input line by sending the address on the address buses। ठीक है, this is how we connect your 0808, or you can say 0809 ADC to the 8051 microcontroller। so this is the same thing how you do the pin connection is written here in this particular slide that we have just discussed कि किस पिन को हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। now other than the parallel ADCs, we have the serial ADCs also। so what happened in the case of serial ADC, यहाँ आप देखोगे कि 8 data lines हैं,
through which your ADC is sending the data to the 8051 microcontroller. Now, instead of using these 8 lines, if I use only single line to send the data from ADC to microcontroller, then it is a serial interface microcontroller. So here this is the diagram for serial interface microcontroller, and here you can see only two type of lines are there, 3 and 2 से ही connected. It means एक डेटा को हम use कर रहे हैं आपके डेटा को सेंड करने के लिए, ठीक है. Now not much description is given about this serial interface, how to connect the serial interface and how this serial interface is working is not much description is given in the book. Only the figure and the specification of the serial interface is given. So these are the specification of this ADC Max 1169 serial interface ADC. Okay, so this is the end of the ADC. Now let's move to the other part, that is the actuator part. Now we have sensors. Sensors are used to sense the data from the environment, and your sensor sense the data, convert that data, whatever quantity, whatever physical thing it will sense, like temperature or moisture, it will sense that particular thing, convert that physical quantity in the analog voltage, send the analog voltage to the ADC. ADC convert this analog voltage into the digital data and send it to the microcontroller. Now either microcontroller display this particular information or it do certain kind of processing on this information. And once it do the information on the data that come from the ADC, it actuate or it starts certain other kind of devices. And these devices are the output devices which will show the output to the user. So here if you say that data will come from ADC to microcontroller and microcontroller display the data. So here display is also a kind of device. So it is also called as the actuator. So here actuator or actuation means something is made to happen. Now this something happening means either you will display some information or you display or you raise some kind of alarm or you start some kind of devices. So if you want to start some other kind of devices, we require a motion kind of thing. So there we will use the motor as an actuator. If you want to display the information, you will use some display devices for those things. So here the display devices work as an actuator. You can even use the display devices as an alarm also. So here actuator means the display devices which will display the output to the user. So first display device that we will discuss here is the first actuator device that we will discuss here is the display devices. So there are various kind of display devices that is used to display the information provided by the microcontroller. So first we will discuss the LED and then we will discuss the LCDs as the display devices in the case of embedded system. So LED, as we have discussed as in sensors also, LED is one such thing which is also used as a sensor, and here it is also using as an actuator. So in the case of actuator, when you use the LED as an actuator, we know the working principle of LED. It works like a normal semiconductor diode जो आपके रहते हैं उन्हीं की तरीके से ये work करता है, and it is usually made up of gallium arsenide and available in different colors. So here you can see one LED. It is connected to a 5-volt source and another the cathode side is connected to the ground and anode side is connected to the 5-volt power supply. And here you can see a resistance also. So you can even use the resistor so that you can control the current that flows through this particular LED. So LED can be used as the display device. LED can be used to display the signal, display the signal as an alarm. If you will on and off, if you keep this LED on and off in a short duration, तो ये किस तरीके से होगा, एक अलार्म जैसा शो होगा. अगर आप LED को continuously on and off करते हैं तो अलार्म जैसा ये डिस्प्ले करेगा. LED if you will keep continuously on, it will show the status of certain thing कि कोई जो आप डिवाइस की बात कर रहे हो वो डिवाइस ऑन स्टेट में है या ऑफ स्टेट में है, तो स्टेटस भी हम इससे बता सकते हैं. हम ये भी बता सकते हैं सर्टेन इवेंट हैपन हुआ, जैसे कोई इवेंट हैपन हुआ आप LED ऑन कर दीजिए तो इट विल ऑल्सो शो द एक्टिवेशन ऑफ सर्टेन इवेंट ऑल्सो. सो LED कैन बी यूज इन वेरियस ways. Now what is the major advantage of using the LED?
So the first advantage is easy to use. This kind of advantage you will find everywhere. I will not even consider these kind of thing as any advantages. The major advantage of using the LED is this: it is very bright, pleasing, and the viewing angle for the LED is very good. You can, good means, you if you view it from any angle, the display will be the same. ठीक है, अगर आप जैसे आप स्क्रीन की बात कीजिए, अगर आपके पास एलईडी टीवी है, आप एलईडी टीवी को फ्रंट से देखिए, आप उसको साइड में बैठ के देखिए, आप उसको लेफ्ट में जाइए, आप उसके राइट में जाइए, आप टीवी के फ्रंट में बैठिए, आपको पिक्चर साइड सब साइड से एक जैसी दिखेगी। तो ये एडवांटेज होता है एलईडी का। इसका व्यूइंग एंगल जो होता है, इट इट हैज द इक्वली वेल व्यूइंग एंगल फ्रॉम एवरीवेयर। बट इफ यू विल सी द सेम थिंग इन द एलसीडी, दैट विल नॉट हैपन। अगर आप एलसीडी को फ्रंट से देखोगे तो पिक्चर आपको एकदम क्लियर नजर आएगी, पर अगर आप बहुत राइट में चले जाओगे तो पिक्चर आपको थोड़ी हेजी नजर आएगी, या आपको प्रॉपर नजर नहीं आएगी, या आप ज्यादा लेफ्ट में चले गए, जो उसका व्यूइंग एंगल्स है उससे आप थोड़ा और ज्यादा लेफ्ट में चले जाओगे और थोड़ा ज्यादा राइट में चले जाओगे तो आपको पिक्चर क्लियर नजर नहीं आएगी। तो ये एलसीडी में होता है, उसके व्यूइंग एंगल इक्वल नहीं होता। इसका मतलब कि आप उसको कहीं से भी देखोगे तो पिक्चर एक जैसी नजर नहीं आएगी। बट एलईडी के केस में ऐसा नहीं होता। इन द केस ऑफ एलईडी इट हैज द इक्वली वेल व्यूइंग एंगल फ्रॉम एवरीवेयर। तो आप कहीं से भी एलईडी को देखिए, आपको उसका पिक्चर सेम नजर आएगा। बट द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द एलईडी इज दिस: इट draw very high amount of current. So to run a LED device, you actually require very high amount of current. This is the only drawback of the LED. Now your LED run in the two mode. One is the common anode connection. अगर आपको single LED को रन करना है, अगर आपको सिंगल एलईडी से को light emit करनी है, then you can use a single cathode and anode connection. But suppose you want to connect number of LEDs, then what you can do, you can connect all the LEDs to a common anode or a common cathode connection. So here we can see this connection. So in this particular case, you can see the common cathode connection. It means the cathode part of all the LEDs are connected to the ground. ठीक है, और एनोड पार्ट जो है वो आपका ओपन है। Now in this case, say suppose if I want to lit only D1 and D3, I want to only lit these two LEDs, then what I have to do, I have to provide the one signal, or you can say the power signal. I have to connect A1 and A3 only to the power supply. If I connect these two A1 and A3 to the power supply, then only D1 and D3 LED will lit. Okay, so when you connect something to the power supply, it means you're providing one. Okay, and because with the ground you are giving the zero information, so when you connect something to the ground, it means you are providing the zero voltage. When you connect something from the power supply, you are giving some positive voltage there. So this is the common cathode connection. In the case of common anode connection, your common anode thing is connected to the power supply. So the anode part of all the LEDs are connected to a single power supply. So already one is coming to all the LEDs. Now if I want to lead a specific LED, then I have to provide the voltage 0 on their cathode side. So say suppose I want to lead only K2 LED. So if I want to lead only K2 LED, I have to connect the cathode part of this LED to the ground. So when I ground this, when I connect this D2 LED, the K2 part of this D2 LED to the ground, यहाँ पर क्या आने लगेगा, जीरो वोल्टेज आने लगेगा। और जैसे ही जीरो वोल्टेज आने लगेगा, आपका ये जो एलईडी है, सेंटर वाला एलईडी है, वो लेट हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ऑन करना है तो इसे आपको इसमें क्या प्रोवाइड करना है, जीरो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। सो दिस इज द कॉमन कैथोड एंड कॉमन एनोड कनेक्शन। एंड यूजली वी यूज सिंगल एलईडीज को भी हम यूज कर सकते हैं एज द स्टेटस बिट, एज द अलार्म बिट, बट यूजली एलईडीज आर यूज टू represent the alphanumeric character. As you can see in the clock on the railway stations, on certain other places also, there you can see the clock is, the characters are made up of the LEDs. So usually we use the LEDs in a group to represent certain kind of information. So here we will discuss a very simple kind of LED segment which is used to represent the alphanumeric character, 7-segment LED. So this 7-segment LED, as you can see, is arranged in a particular manner,
and here with this 7 LEDs, so every line will represent one LED here. तो यहाँ पे A B C D E F G तक जो आपको नजर आ रहा है ये एक एक LED को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ में यू कैन सी वन मोर थिंग हियर, दैट इज द DP which is used to represent the decimal point. So it is basically a 1 byte combination. तो 1 byte का आपका डेटा आप इसमें सेंड करोगे तो अब आपके एलईडी पर एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले होगी, ठीक है। अच्छा, गिव मी 1 सेकेंड। Okay, so there, so here you can see that we are using 8 LED segments. Okay, 7 to represent this particular combination, and one LED segment is to represent this decimal point. So though you are using 8 LEDs here, it is still called as the 7 segment LED. हम use कितने कर रहे हैं? 8 LED segments use कर रहे हैं, but फिर भी हम इसको क्या कहते हैं? 7 segment LED कहते हैं. You can see how these bytes are arranged. So A will be treated as an LSB bit, and DP is treated as an MSB bit, and then rest of the bit you will use in the particular order. So this is how we will see. Now if you want to display certain information, so suppose I want to display A here. So if I want to display A here, I have to keep E, F, A, B, C and G as in on state, ठीक है। अगर मेरे को A डिस्प्ले करना है, कैपिटल A डिस्प्ले करना है, A इज फॉर एप्पल, एप्पल वाला A, तो अगर वो डिस्प्ले हमें करना है तो हमें किन किन एलईडीज को ऑन करना होगा? E, F, A, B, C एंड G, इन एलईडीज को हमें क्या करना होगा? ऑन करना होगा। अब ऑन करने से हमारा क्या मतलब है? व्हाट इंफॉर्मेशन आई शुड प्रोवाइड हियर, वेदर आई हैव टू प्रोवाइड 1 हियर और आई शुड प्रोवाइड 0 हियर। नाउ दैट डिपेंड कि आपका जो 7 सेगमेंट एलईडी है वो कॉमन एनोड कनेक्शन है या वो कॉमन कैथोड कनेक्शन है। सो लेट्स रिवाइज दिस थिंग अगेन। कॉमन कैथोड में आप देखोगे कि कैथोड जो है वो सभी का ऑलरेडी ग्राउंड है, मतलब 0 सभी में आ रहा है। अगर आपको किसी एलईडी को ऑन करना है तो इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करनी है? आपको उसके एनोड पार्ट पे 1 प्रोवाइड करना है। तो अगर आपका 7 सेगमेंट एलईडी कॉमन कैथोड कनेक्शन से बना है तो हमें क्या प्रोवाइड करना है? इंफॉर्मेशन एज एन 1 प्रोवाइड करना है। मतलब अगर मुझे एलईडी को ऑन करना है तो मुझे 1 प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगी। अगर मेरा कॉमन एनोड कनेक्शन है, इट मीन्स 1 तो ऑलरेडी मेरे पास में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 तो पावर सप्लाई से सारे एलईडीज में आ रहा है। अगर किसी एलईडी को मुझे ऑन करना है तो मुझे यहाँ प्रोवाइड क्या करना पड़ेगा? 0 प्रोवाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स एलईडी के कैथोड प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा? ग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आप एक बाइट देख रहे हो, इस बाइट में जो आपका 1010 का जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा, उस कॉम्बिनेशन में आपको ऑन को 1 से रिप्रेजेंट करना है या ऑन को आपको 0 से रिप्रेजेंट करना है, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आप कॉमन एनोड कनेक्शन ले रहे हो या आप कॉमन कैथोड कनेक्शन ले रहे हो, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस ए का ही हम डिस्कस करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वो आप बाद में रीड आउट कर सकते हो। सपोज कि हम पहले बोलते हैं कि जो हमारा 7 सेगमेंट एलईडी है, इट इज अ कॉमन एनोड कनेक्शन। एनोड कनेक्शन का मतलब है इस टाइप का कनेक्शन है, ऑलरेडी 1 आ रहा है मेरे पास सारे एलईडीज में, और मुझे अगर ऑन करना है किसी एलईडी को तो मुझे उसके कैथोड साइड पे 0 प्रोवाइड करना है। तो मुझे कहाँ कहाँ 0 प्रोवाइड करना होगा? अगर मैं यहाँ पर इस फिगर में देखूं तो 0 कहाँ प्रोवाइड करना है? मुझे यहाँ 0 प्रोवाइड करना है, A B C E F G, इन पे मुझे क्या प्रोवाइड करना है? 0, और रिमेनिंग पे ऑलरेडी क्या आ रहा है? 1। तो हमारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। सेकेंड बिट भी आपकी हो जाएगी 0, थर्ड बिट भी आपकी हो जाएगी 0, क्योंकि हमें ए बी सी को ऑन करना है। डी हमारा क्या होगा? 1, क्योंकि ये कॉमन एनोड कनेक्शन है, इसमें ऑलरेडी 1 ही आ रहा था पहले से, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना है? 0। यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड करना है? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन 0। यहाँ पे हमें क्या प्रोवाइड करना है? नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन 0। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास में? 1, ठीक है। अगर कॉमन एनोड कनेक्शन है तो ए डिस्प्ले करने के लिए आई हैव टू प्रोवाइड दिस थिंग। इफ इट इज कॉमन कैथोड कनेक्शन तो अपोजिट हो जाएगा, ऑलरेडी सब जगह क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। सारी एलईडीज पे एक पावर ऑलरेडी आ रही है जो कि 0 वोल्ट है। अगर मुझे किसी एलईडी को ऑन करना है तो मुझे क्या पावर प्रोवाइड करनी पड़ेगी? 1। तो अब ये 0 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे इस केस में? 1। अगर ये कॉमन कैथोड कनेक्शन होगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
ये भी अगेन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी हो गया, डी हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें पहले से 0 आ रहा था, ये आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद में ये भी आपका 1 हो जाएगा, इसके बाद में नेक्स्ट भी आपका 1 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी क्या हो जाएगी आपकी इन्फॉर्मेशन 0 क्योंकि ऑलरेडी 0 थी। तो अगर मैं कॉमन कैथोड कनेक्शन को देखूं तो डिफॉल्ट अगर मैं किसी में भी कोई भी पावर कुछ भी नहीं प्रोवाइड करी, अगर कॉमन कैथोड है, अगर ये कॉमन कैथोड है तो इन सभी पर क्या वोल्टेज आ रहा है, ऑलरेडी वोल्टेज क्या है 0 है, ठीक है। अगर कॉमन कैथोड, अगर कॉमन एनोड कनेक्शन है तो इन सभी पे क्या वोल्टेज आ रहा है, ऑलरेडी 1 आ रहा है, और हमें ऑन करना है तो उस 1 को हमें क्या करना होगा, फिर वहां पे क्या हमें प्रोवाइड करना होगा, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन 0। सो दिस इज हाउ वी प्रोवाइड certain information or the data bit in the 7 segment LED to keep it on or off. Okay, are you able to understand this part? So based on this thing only we have discussed certain kind of example here कि कॉमन कैथोड होगा तो आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको किस तरीके से करना होगा। जैसे अगर हम कॉमन कैथोड की बात करते हैं तो अगर आपका कॉमन कैथोड है तो इस पूरे ही एलईडी सेगमेंट के अंदर क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, ऑलरेडी कैथोड का मतलब क्या हो गया, ग्राउंड से कनेक्टेड, तो ऑलरेडी सभी में एक पावर सप्लाई क्या था, या एक वोल्टेज जो था वो क्या था 0 था, तो इन सभी में ऑलरेडी यहाँ पे क्या होगा 0। अगर मुझे ऑन करना है तो मुझे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा 1। तो 8 प्रोवाइड करने के लिए अगर हमारे पास कॉमन कैथोड टाइप ऑफ कनेक्शन है तो आपका बिट क्या हो जाएगा इस तरीके का। और अगर ये कॉमन एनोड होता तो ये क्या हो जाता, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉमन एनोड कनेक्शन होगा। रेस्ट ऑफ द एग्जांपल यू कैन सी हियर, हमने इसमें से ए डिस्कस किया है कॉमन एनोड और कैथोड में, बाकी कनेक्शंस आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। सो दिस इज व्हाट द 7 segment LED। Okay, now there are two type of 7 segment LED. One is the static 7 segment LED, second one is the dynamic. So what happened in the case of 7 segment, this is the 7 segment LED. Now if it is static, it means once I provide the power supply, I will continuously provide the power supply. Okay, तो जब तक आप power supply provide कर रहे हो आपका LED continuously on रहेगा, ठीक है, वो blink नहीं करेगा, वो continuously on रहेगा। तो ऐसा as a connection where you are continuously providing the power supply and your LED is continuously on is called as the static 7 segment static this what you can say static 7 segment display. Okay, it means continuously you are providing the power and continuously your LED is in the on state. This is called as the static. Now what happened in the case of static, major issue with the static 7 segment display is this कि as I've already told you कि जो LED होता है it consume lots of power, ठीक है। यूजली जो पावर वो कंज्यूम कर रहा होता है वो 5 से 30 मिली एम्पियर के बीच में। एक एलईडी सेगमेंट जो है आपका उसको लाइटन अप करने के लिए यू रीड 5 to 30 मिली एम्पर से मिली एम्पियर के अप्रोक्सीमेटली यू रिक्वायर द पावर। नाउ सपोज कि इफ आई वांट टू डिस्प्ले 8 डिजिट डेटा, 8 डिजिट डेटा को अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो आई नीड 8 7 सेगमेंट एलईडीज, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द गिवन ईयर कि अगर हम एक 8 डिजिट डेटा को डिस्प्ले कर रहे हैं तो हमें 7 सेगमेंट एलईडीज कितने चाहिए होंगे, 8 7 सेगमेंट एलईडीज चाहिए होंगे। सपोज एक सेगमेंट इस 7 सेगमेंट एलईडी के एक सेगमेंट को डिस्प्ले करने के लिए हमें कितना पावर चाहिए 25 मिली एम्पर। तो टोटल पावर आपका कितना हो जाएगा 1.4 एम्पियर के अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, विच इज अ वेरी हाई पावर इन द केस ऑफ अ electronic device। And if we provide such a high power then the lots of heat will be dissipated which we cannot tolerate in the case of embedded system devices. So this is a major issue with the static 7 segment display that it consume lots of power. So instead of using, that's why it is not very much preferred in multiple digit display। तो जहाँ पर हमें एक से ज़्यादा डिजिट को डिस्प्ले करना है या हमें 7 सेगमेंट एलईडी टाइप का कोई एप्लीकेशन बनाना है तो वहाँ हम स्टैटिक डिस्प्ले को यूज़ नहीं करते। स्टैटिक डिस्प्ले जनरली यूज़ हो रहा होता है जहाँ पर हम सिंगल एलईडी सेगमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं, केवल एक एलईडी यूज़ कर रहे होते हैं, उसको ब्लिंक कर रहे होते हैं अलार्म जैसा शो करने के लिए, या उसे कंटिन्यूस ऑन रखते हैं टू शो द स्टेटस ऑफ सर्टन डिवाइसेस, वहाँ हम स्टैटिक यूज़ कर सकते हैं। बट इफ़ यू वांट टू डिस्प्ले द मल्टी डिजिट डिस्प्ले then instead of using the static display we will use the dynamic display. Now what happened in the case of dynamic display, instead of reading this particular thing I will explain you with this particular figure. So this is my 8051 microcontroller। मुझे 4 डिजिट का एक नंबर डिस्प्ले करना है। 4 डिजिट का नंबर डिस्प्ले करने के लिए आई नीड 4 7 सेगमेंट एलईडीज।
Now what I will do, instead of keeping all the digits on at the same time, what I will do, I first select one digit. Say suppose I selected this digit, so I select the first digit, I send the number. Say suppose यहाँ पे मुझे 3 डिस्प्ले करना है, तो जो 3 के लिए जो कोड होगा, that code I will send. I display 3 here for some period of time, then I keep this particular 7 सेगमेंट डिस्प्ले एज ऑफ. इस पूरी डिजिट को हम ऑफ करेंगे और नेक्स्ट डिजिट को सेगमेंट को डिस्प्ले करेंगे. फिर इसको ऑफ करेंगे और इसको ऑन करेंगे, नेक्स्ट डिजिट को ऑन करेंगे, फिर इस डिजिट को ऑफ करेंगे और फिर इस डिजिट को. तो हम बहुत थोड़े 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 टाइम के लिए क्या करते हैं, हर एक डिजिट को ऑन करते जाते हैं. एंड वी डू दिस फॉर इन अ सर्कुलर फैशन. जब इसको ऑफ करेंगे तो फिर हम वापस इसे ऑन कर देंगे. एंड वी डू इट इन अ very microseconds, in very fraction of seconds we do this particular thing. So in this particular case, due to the persistence property of your eyes, it will give a illusion of continuous display. आपको क्या लगेगा कि हर एक सेगमेंट जो है वो कंटिन्यूसली ऑन है, जबकि वो कंटिन्यूसली ऑन नहीं है. वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ऑन है, फिर वो ऑफ हो जाता है, फिर नेक्स्ट डिजिट आपका ऑन होता है, फिर वो ऑफ हो जाता है, फिर उसका नेक्स्ट डिजिट ऑन होता है. सो दिस इज व्हाट द डायनेमिक डिस्प्ले इज, where your the segment LED or your LED is not taking the continuous power. It is on for some period of time, then it will be off, then the next LED segment will be on. So this is the dynamic display. Now here you can see the connection. So we have a digit driving logic. Digit driving work of the digit driving logic is to select one of the digit, which digit you want to display first. So say suppose I select this digit, then I display this digit, then keep it on for some period of time, then I make it off, and then keep another one as on. So this is how we will use the dynamic display. This is one more elaborated diagram of no, this is not the elaborated. That figure is not there. Give me 1 second. I'll show you that figure. Chapter 2, don't have chapter 3. Okay, I don't have that elaborated figure with me right now. I will show you in the next class that the actual connection between the 8051 and the 8-digit display, and we will discuss the same in the next class also, कि वो connection किस तरीके से connect करेंगे and how we keep those things on and off and how we use the common cathode and anode connection in this. That is nothing, just the more elaborated description of this diagram only. So here you can see you use the port 2 because you are sending a 8-bit data to display one of the segment, and here you can use 4 pins to select one of the digit of this 4-digit display. Now let's discuss the last part, that is the organic LED. This is another type of LED which is very popular nowadays in the mobile phones, TV, and very portable. In many portable applications you will see the OLED screens. Now what is a OLED screen? If you will see, this is the same thing. I just give the description here. So what is the OLED? OLED is made up of organic materials, and now these material is basically a light emissive materials. It means they automatically produce the light. ओके किस तरीके से वर्क करता है, इसमें एक टॉप लेयर होती है, एक बॉटम लेयर होती है. तो हियर यू कैन सी दिस ग्रे लेयर. सो द टॉप ग्रे लेयर इज कॉल्ड एज द सील and the bottom gray layer is called as the substrate that you can see here. So this is a glass substrate here, and this is a glass seal here and glass substrate here. ठीक है, तो एक टॉप एंड बॉटम लेयर होती है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है. देन उसके बाद में एक कैथोड का लेयर होता है और एक एनोड का लेयर होता है. इसके बीच में जो होता है वो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल होता है. दिस ऑर्गेनिक मटेरियल में भी देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल जिनको हम कंबाइन करके OLED बनाते हैं. एक एमिसिव लेयर होती है और एक कंडक्टिव लेयर होती है. नाउ इफ यू वांट टू सी हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग विल वर्क, यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर फिगर. सो जब आप पावर प्रोवाइड करते हो तो आपके जो कैथोड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं और एनोड पार्ट में होल क्रिएट होते हैं. देन जो आपके होल क्रिएट होते हैं वो कंडक्टिव लेयर्स में जाते हैं, जो कैथोड जो इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं वो एमिसिव लेयर में आ जाते हैं.
जब आप ज़्यादा पावर सप्लाई करते हो तो ये फिर जो है कंडक्टिव लेयर से कहाँ पे क्रॉस होकर जाते हैं, एमिसिव लेयर्स में जाते हैं। और जब आपका होल और इलेक्ट्रॉन व्हेन दे कंबाइन दे प्रोड्यूस अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइन इन फॉर्म ऑफ फोटोन, एंड दैट लाइट इज बेसिकली थ्रू दैट द स्क्रीन विल बी लाइटन अप। तो इस तरीके से आपके ओलेड डिवाइसेस जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। तो इसमें हम बाहर से पावर नहीं प्रोवाइड कर रहे होते, ये ऑटोमेटिकली ये लाइट जनरेट कर रहे होते हैं, इसलिए ये सेल्फ एमिसिव डिवाइसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द ऑलेड डिवाइसेस। दो टाइप के ऑलेड डिवाइसेस होते हैं, एक one is the small molecular OLED and second one is the polymer. Small has the longer lifespan whereas polymer does not have such a longer lifespan. But the major advantage of both, whether you will talk about the small or the polymer, is this that they are very thin and very light weighted. So with this OLED material you can make very thin screen. So the major advantage of using the OLED is it has unlimited viewing angle because it is a LED. It has very low power consumption, it has very faster response, bright and more brilliant picture because the colors are produced using the light emissive ऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, सो यहाँ पे जो आपका पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ब्राइट होती है। You do not require any backlight as you in the case of LCD you required a backlight to display the certain thing on the screen. And other than that, if you will compare it with the CRT, here fabrication process is also easy. तो जो CRTs होते थे वो काफी ब्रॉड होते थे, स्क्रीन आपकी बहुत थिक होती थी, यहाँ पर आप थिन स्क्रीन क्रिएट कर सकते हो with the help of the OLED devices. The only disadvantage of OLED is this, जो ऑर्गेनिक मटेरियल आप यूज कर रहे हो, एमिसिव एंड कंडक्टिव मटेरियल आप जो यूज कर रहे हो, उसका बहुत शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है। तो ये जो स्क्रीन आप बनाते हो इससे OLED डिवाइसेस से, वो स्क्रीन जो है उसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्टर होता है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी सेंसिटिव टू वाटर। तो अगर आप उसे मोबाइल वगैरह में यूज़ करते हो तो वो स्क्रीन जो है आपकी बहुत जल्दी जो है उसकी पिक्चर क्वालिटी with the time वो depreciate होती चली जाती है and the picture quality is not that good after some period of time. So that is the only disadvantage of the OLED devices. Okay, with this we end our lecture here only. In the next lecture we will discuss the LCD devices, and if you have any doubt we will discuss the same also in the next lecture because we are already running short of the time. Thank you so much. Thank you all.